अब हम पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 3। Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word fu written on them, which means luck and happiness. Buying flowers for the home is also commonplace since they symbolize the coming of spring and a new beginning. पैराग्राफ की रीडिंग के बाद अब हम इस पैराग्राफ के अंदर आने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग और उनके सिनोनिम्स का मुताला करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज़ पॉपुलर, मशहूर, फेमस, कस्टम, रवायत, ट्रेडिशन, साइंस, तख्तियाँ या इश्तिहारात भी कह सकते हैं, बोर्ड्स। द नेक्स्ट वर्ड इज़ posters, ishtihar, leaflets. The next word is commonplace, मामूल, common, symbolize, इलामत होना, represent. And the last word is beginning, आगाज, means start. तो डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग के बाद अब हम इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करते हैं। Another popular custom, एक और मशहूर रवायत, is to hang up signs and posters on doors and windows. वो दूसरी रवायत कौन सी है कि दरवाज़ों और खिड़कियों पर इलामती इश्तिहार और पोस्टर लटकाना होता है। उस पर क्या लिखा होता है? With a Chinese word fu written on them, जिन पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है, which means luck and happiness, जिसका मतलब किस्मत और खुशी है। Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word fu written on them, which means luck and happiness. एक और मशहूर रवायत, दरवाज़ों और खिड़कियों पर इलामती इश्तिहार और पोस्टर लटकाना होता है, जिस पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है, जिसका मतलब खुशकिस्मती और खुशी है। The next line is buying flowers for the home is also commonplace. घरों के लिए फूल खरीदना भी आम है। क्यों फूल खरीदते हैं? Since they symbolize, क्योंकि वो इलामत होते हैं, यानी कि वो फूल अलामत समझे जाते हैं। The coming of spring and a new beginning, बहार की आमद और नए आगाज की। Buying flowers for the home is also commonplace since they symbolize the coming of spring and a new beginning. घरों के लिए फूल खरीदना भी आम है, क्योंकि वो बहार की आमद और नए आगाज की इलामत होते हैं। तो ये थी इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन। अब हम पढ़ते हैं इस पैराग्राफ की सिंपल इंग्लिश। Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word fu written on them, which means luck and happiness. तो इसकी सिंपल इंग्लिश है कि according to custom, the Chinese also hang posters and banners with the word fu written on their doors and windows. It means happiness and good fortune. The next line is buying flowers for the home is also commonplace since they symbolize the coming of spring and a new beginning. तो इसकी सिंपल इंग्लिश है कि there exists another custom among the Chinese that they buy flowers for their houses. It shows the start of the spring and new year. तो ये थी इस पैराग्राफ की सिंपल इंग्लिश। इसके साथ हमारा पैराग्राफ नंबर 3 भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है।